Namaskar, good morning. This is Suraj Singh, civil engineer, Bharat, India. Issues related to our country, daily issues. Many ill things are happening in our country. First is economy, second is society, third is government, fourth is parliament, and many more. JNK and others. There is no one issue. We are full of issues, full of issues. Yes, we have constitution, we have slogans, we have people, we have money, we have everything, we have power, we have law. Every system exists, yet people are at unrest. Why? Because in a country where women are not safe, what can you say about that? Can you say about that Vande Mataram? Can you say about that Bharat Mata ki Jai? Bharat Mata ki Jai. Mata, mother, matratav, and rape, balatkar. What a relation. Bharat Mata ki Jai. Vande Mataram, both are females. Vande Mataram also target of female, and Bharat Mata itself is a female, and we rape female. What a coincidence. We don't feel any degree of shame. And those who are in government, they are somewhere else on moon or on Jupiter or on sun. Nobody knows where are those responsible and accountable people of this country. They come to power and they enjoy power and they become everyone. They do not know anything, just enjoy power. And people who elect them, they suffer. This is basic phenomenon of this country. People cry, people shout, people do unrest. Nobody bothers because those who are doing unrest are hardly 0.05% of total population. Who bothers? 545 MPs in one house, 250 MPs in other house, and 5,000 MLAs in various houses of this nation. But for what? For enjoying life, for roaming here and there, to take all facilities from public funds and do nothing for public. This is called honesty is best policy. This is called Satyamev Jyete, and this is called Vande Mataram, and this is called salute to Mother Land. What sort of salute is this? We sing a lot, Jan Gan Man Adhinayak Jayo He Bharat Bhagya Vidhata. Bharat Bhagya Vidhata. Which Bharat? Which Bharat is that? I don't see that Bharat, which is Bhagya Vidhata. Here are politicians Vidhata. Here are criminals Vidhata. Here are rapists Vidhata. Here are corrupt Vidhata. Here are liars Vidhata. So many Vidhatas in this country are working, and on top of that is Vande Mataram. Vande Mataram is there, which says something else, and beautifully it says Vande Mataram. Well, sometimes you feel angry and you have to speak like this to tease yourself. It says Suzalam Sufalam Malaja Sheetlam. Yes, it says Suzalam Suflam Malaja Sheetlam. जल शुद्ध है, जल बहुत शक्तिशाली है, शुद्ध जल सुजलाम, सुफलाम फल बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है, और मल्लजाम जो दक्षिण से हवा आती है बहुत अच्छी, ससस्य श्याम लाम महात्रम शुभ ज्योत्सनाम पुलिकत यामिनम फुल कुसुमित दुमदल शोभिनम ध्रुवम शोभदेम सुहासिनी समुद्रम भाषणिम सुसदा वंदे मातरम. Long too much in this. Mother, I salute thee, rich with thy glowing streams, bright with orchard gleams,
cool with the winds of delight, green fields waving mother of might, mother feet, glory of moonlight dreams over branches and sharing, clad in blossoming trees, mother overseas. I think we should also add some kind of additional activity that our country is doing, which are nonsense. We should do that. We are not caring about that. We are not having any degree of shame. One side we are calling Vande Matram, hey mother, salute to you. Other side we are saying Jan Gan Man Adhinayak Jai He Bharat Bhagya Vidhata. We are saying both. And on top of that, Satyameva Jyete. And on top of that, insult a woman, rape a woman, corruption, crime, robbery, loot, and every negative, every nonsense on top and top and top of that. And on top of that, political rascals on top of that. And where is constitution then? Constitution has gone to some pit and filled by these people. There is no constitution. There is no statute. There is no law. There is no institution. No executive. No judiciary. No legislative. Only fool's paradise. This is the reality of life. Reality of life. Constitution is a picture, grim picture which is only shown. Advertisement, publicity. Otherwise, there is no law, there is no system. Andher Nagri Chopat Raja. That's it. 140 crore people brought a government. 140 crore people brought legislature. 140 crore people brought executive. But for what? For what? I can't understand. I don't know. Where are they? Where are those devils, those ghosts sitting in parliament and enjoying and talking and disputing and debating? They are born only for debates. They are born only to allege upon each other. They are born for words. You have no right, you have no right to call them stupid. You have no right to criticize them because they are above criticism. You can criticize God, but you cannot criticize these rascals, whoever they are. All robbers, I would say, all rapists, all murderers, all liars. No commitment, no duty, no responsibility. Just I am, that's that. No control at all in any field. Any field, rape and murder is very common. Corruption is more common. No judgments, fast judgments. What is going on? Is Bharat it is or what it is? Is Bharat my Bharat? Vidhata? Bharat Bhagya Vidhata. Who is Bharat? Where is Bharat? Where is Bhagya? Where is Vidhata? I don't find anybody, believe me. Either my eyes are closed, my mind is closed, I cannot identify them, or they are in air color, I cannot see them. They are part of air, they are embedded in air, so you can't see them. Satyameva Jyete. Rape is Satyameva Jyete. Corruption is Satyameva Jyete. No doing work is Satyameva Jyete. Bluff is Satyameva Jyete. Satyameva Jyete has got many, many more meanings. I think it's by mistake Satyamev. It should be Jhootmev Jyete. Some mistake has happened somewhere by author, I hope, or by interpreters. There is no Satyamev Jyete in this country. There is no Satya. Because there is no Satya. There is no, everything is false, everything is lies. Leaders lie. Big leaders lie. Those leaders who are supposed to work for you, supposed to sacrifice for you, supposed to deliver you something they promised or even not promised, they are liars. Liar or lying or lies or false or fake, I consider that very big crime, more than murder,
more than rape, because you are raping trust. By lie means you rape trust, you rape faith, and you rape everything. A person who lies to me, I don't consider that person as human being. You only lie. It's not such a big country where problems cannot be controlled. But who has to control? Only every day you find new and new drama, new and new pictures. But nobody is thinking about the root of problem. Root of problem is not contemplated by anybody. It seems that we are staying in a country of forest, in a country of all dead, in a ghost country where nobody is living. Nobody is living. You cannot speak against those in power, and you will speak. You are not doing in national interest. This is our minister states, our minister, cabinet minister. If you speak, if you speak something against government or state, you are doing anti-national work. This is mandate of our ministers who were elected by people of this country. And people are anti-national because they raise questions. If you raise questions, you are anti-national. What a beautiful definition of anti-national. And these people who are ministers, they are sacrificing for country. They are standing on borders to protect you. They are doing everything honestly. Believe me, I think first country in world where definitions are changing, meanings are changing. Bharat Bhagya Vidhata. This is our work. Vande Mataram. This is our work. Our religion is lying. It is lie full of lies. There is no religion but lies. Shame unto myself as a citizen of India that I am ready to tolerate all this. And shame unto all those who are helping tolerate all this. We have no blood. We have no water in our body. We have no electric current in our body. Our brains have gone dead. Our souls have gone defective. We are living in Bharat Bhagya Vidhata, and we are living in Vande Mataram, where mother is doing everything for you versus children are sleeping. And when children sleep, they become more healthy. They take rest, and mother is happy. Oh, my children are sleeping, and very nice. Really, you have to tease yourself this way. If you cannot tease yourself, there is no one to tease you because everybody is sleeping. Bharat is sleeping. Bharat has been sleeping, and Bharat has no plan to rise and awaken. This is fact of life. Rape is very common. Murder is very common. Terrorism is very common. Everything is common. Crime is common. In a country where you find 233 out of 545 authorities, high power authorities known as member of parliaments are elected by people from criminal records who have criminal background, what can you say about those people, that society? 45% people, member parliaments are elected from background they are having of crime, and they are required to be prosecuted and punished, but they are now member of parliament, Lok Sabha. What a great achievement of our people. Our people know this person is criminal. They know, but they vote him. What do you expect then? Where should country go? Should country go to Satyavadi Harishchandra formula? Or country should go to Ram formula? Or country should go to where? Krishna formula? Or you can say Kansa formula? Or which formula it should go? I cannot say where it should go.
140 crore people in world are sleeping. They don't know what seriousness they dream during sleep. They are in heaven. They are enjoying life. All are enjoying life. This is my country. Beautiful country. And people fight among themselves. Students fight for P. I cannot study. This government is not allowing me to study. Girls are fighting. We are raped. Government is doing nothing against that. People are enjoying internet and they are doing all good or bad with internet. Internet is helping them create problems and then face problems. No control on that. Government is doing everything 24 hours a day, but results are zero. What a country we have. What we should say? There are millions and millions and millions of professionals in this country. All classes of professional, but country is sleeping. There is millions of army people and forces, but country is sleeping. I don't understand why we are sleeping. I don't understand why even we are voting. Why do you get up to vote? For what? What's aim? I am not finding any aim for my vote. Even then people are voting. You cannot protect your society from crimes. You cannot protect your babies, your girls, your youth, your adults and ladies from being raped. You cannot protect society from those robbers. You cannot give education to your students. You cannot produce some values in society. You cannot check what's happening in this country. And then you say, my beautiful country, everything is very well here. Who says? Our person who was elected by our representatives or a top executive, he says that. I don't understand whether his mind is working or locked. I'm not sure. If I raise question, one minister says, this is against national policy, this is against nation, you should not say that. You should always say, all is well, there is no problem. Problem is only in imagination. You keep 1 crore people under your curfew, under a military, and there is no problem. If this is my Bharat Bhagya Vidhata, if this is my Bharat Bhagya Vidhata, and this is my Sujalam Sufalam, then I don't need that. I don't need that. It's a state of affair in my country. There is Prime Minister, there are 60 ministers, there are 800 members of parliaments, there are 5,000 members of legislative assembly, and there are 60 ministries, and then state ministries, lot of police. Then we are finding problems. This means there is no control. This means there is no worry. People only get to powerful offices for sake of status, for sake of showing to the world, see what we are. Only for that purpose, not for national problems, not for social problems. You are shown mountains from other countries. See where we are, how we are respected. If your PM is respected, you are respected. This is what that person says. Means you just have a degree of respect from overseas and you do nothing for your country. You are forgiven. What should I say? Can you say something else? Believe me, I cannot define this country. I cannot say what's happening. I cannot say. I don't understand what's ongoing. I may cry, I may shout, I may get angry more and more and more, I raise my temper, but no result appears, no result comes in. Therefore, I am joking. Sometimes there is no use to fight with mouth, with tongue, or to use abusive language. Sometimes in that case you relax.
You cut jokes. Ha 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 ha. We are progressing well. We will achieve $10 trillion target economy. We shall achieve this in 20 years. We shall throw out all illegal immigrants by 2024. That is more worryable. That is more concerned than you are not having food. You are more concerned on that. You are more concerned about Pakistan, not about your country. You are more concerned about them. This is happening. What can I do? My television channels are stupid and rascals. They are bought by someone. They are not giving me correct news. My newspapers are misleading me. My ministers are misleading us. My students are not getting good education. No professional is working fine. And whatever we created long back, that is being sold like a showroom sales. Come on, buy one, take another one free. Our leaders are salesmen. Yes, our ministers are salesmen. They are selling. Very good seller. Very good seller. You can sell your mother. You can sell your father. You can sell your brothers and sisters. You can sell public. You can sell everything. You are sales expert. What should we call otherwise? Tell me. What should we call otherwise? Our government in power does not want that its people, its students should study. They don't want that. Knowledge has no value for them. Knowledge has no light for them. It is darkness. Our leaders think that way because they are not very well educated themselves. And a person who is not very well educated himself, he doesn't want someone who be educated to associate that man. That is principle of foolishness or factual life. Sometimes you think you can solve every problem without even thinking. That policy is being adopted by this regime, which is called Government of India, led by BJP, led by Modi. There is no criticism of Modi. I don't criticize in person. I criticize only system that is working. And that criticism is a must. If I have capacity, and potential, if I can think, if I can check, I can examine and audit, that is my natural duty, that is my national duty, that is my constitutional duty, and that is my self duty to bring it to light to people what I think. It is up to people whether or not to accept that or to reject that. That is their prerogative, not my prerogative. But people are not even receiving. They are not even thinking. They think all is well. When all is well, it means nothing is well. There is no country involved. There is no family involved that can say all is well. If you say all is well, that is only a formality indicator, not real indicators. When you meet someone, how do you do or how are you? Yes, I am fine, thank you. That is a common answer. That's not the real answer. But remember, common answer is given to common people, not to real people. If I say all is well, this means nothing is well. Simple. We should say, yes, there is some problem, but everything is okay except something, this, that. That's fine. But if you say all is well, it is impossible. There is no country in the world. Go to America, all is not well. US president in problem. So many other problems do exist there. It is always having economical problems for other countries. It has problems with China.
It has problem with Venezuela. It has problem with Iran. It has problem with many other people. Go to Venezuela, you know there is a problem between opposition with the government. You go to other countries, Brazil, you will find problem. You will go to Lebanon, you will find problem, political problem. You go to Palestine and Iraq, Israel, you will find problem. Israel has problem and Palestine has problem. You go to Gulf, you will find problem of Yemen. Everywhere, China, there is problem. African countries, there is problem in many countries, and Far East countries problems, many problems in Hong Kong problem and Philippines problem and many problems and problems and problems. Everywhere there is problem except in Bharat, sovereign, socialist, secular, democratic republic, Bharat, India. That is no problem. Everything is okay, everything is fine. What a beautiful and fortunate country it is. It's full of problems. There is no problem which is not called a problem in this country, yet we are saying there is no problem. What shall you call this statement? It's a factual statement, or it's a fake statement, or it's a lie, it's full of lies, or it's misleading whole world and yourself. You have to opt out yourself. State that's existing today, legal state of this, shame onto our people. Such a big establishment, a country of 140 crore people and many states, rapes are affected, murders are affected, rapes of even kids, babies are affected, robberies are affected, bank loot is affected. But politics move on and on and on. You may loot nation, you are Satyavadi, you are honest. You cannot call somebody accused or criminal. You may sit in parliament despite being terrorist or murderer. You cannot call them terrorists because no punishment has been awarded, no sentence has been awarded. But that sentence may take 50 years to be awarded, then you have to wait for 50 years to comment that person rapist or terrorist. It's not my fault if judiciary doesn't work. It's not my fault if government doesn't work. What I see, I shall call. If that person is behind bars or has been behind bars in certain crime, I will name it as such. Whatever court grants, I don't care, because court takes whole life to decide. I have to wait for that. Why should I suffer because of court's inefficiency or government inefficiency? I should not suffer back because of that. It's not my duty to suffer that way. I shall comment, yes, because she has been jailed and accused, 90% of the crime has been conducted. So I should say that, yes, you are this. Why should I run away from this fact? Why should I worry about what government says? I know those who are sitting in parliament are not my elected people. They are fake people. Fake, of course, I say. Because individual voters did not know who their candidates were. They elected Modi, or they had to elect Rahul or Congress or BJP. This means a citizen, as a common voter, does not know what that voter elected for. So you'll find these problems. My earning is being robbed. My money is being looted. My money is being abused. My money is being thrown away into dustbin. I have no right to speak why that is being done. This is our political leaders expect us to conduct. Don't ask anything. That's it. Because I am your leader. And I mean business. I can do whatever I want. A joke, Maharashtra. We know that BJP could not
succeed to power in that state. It lost, and another parties, or you can say another alliance got into power. So what? It happens. Somebody comes, somebody goes. What's the problem? Why don't you accept this honestly? Why are you bringing some image to public that we were in power for 3 days to save 40,000 crores from going into hands of new government? What does it mean? It means you are honest and others are dishonest. You wanted to save 40,000 crores from going into hands of new government. Why? Are those people who are constituting new government not elected by people? Only you are elected by people. You are honest and others are not honest. Dishonest others are. You have to answer. Then you are other man who was CM is saying this is false. I did not transfer any money to central government. Means what is this contradiction? After all, why this question came up? What was necessity of this question to just whitewash your defeat? Why this was required? What for? A government is dealing with money. Your government was dealing, now other government has come, they are dealing. On what basis you can say that they will loot it or they will misappropriate it? If they do so, they will own their responsibility. They can do anything in future. How shall you protect them then? Means you are lamenting them criminals in advance. What sort of politics is this? They are also government like you are. They have taken constitutional oath. So if they do something wrong, they will suffer. You say you claim that you saved 40,000 crores, but what about others? Is there only 40,000 crores in that state? No other funds? How will you protect that from being looted if you think they will loot? This is what I'm making an example. That is recent current affair. You can go to any extent to defame someone. You defamed last government of Congress and UPA. They looted in 2G, they looted in this G, they looted in coal, they looted in this, and so far nobody has been punished. It's only drama. Sometimes you put Chidambar in jail, sometimes you put someone in jail. Because you have to just defame. Your policy is only to defame someone to come to power. So what about yourself then? I start defaming you now because you have not done anything. You are selling this country to your friends. Your friend was having 4 lakh crores, now he's having 10 lakh crores. How did he get that? Other countries are falling. I am starting blaming you now. You prove it, you are honest. You have not done anything in this country. You have not created any development. You have not done anything. You have not enhanced economy. You have failure everywhere. You have to answer. Answer me. Answer me. You simply said if some businessman says there's a problem in this country, you accept that. That is anti-national. You are national only. A citizen is anti-national. An industry is anti-national. Only a minister is national. Only your party is national. What do you think of yourself? You're going crazy. Completely crazy. Everybody is sitting in this country. Though you do nothing for this country to achieve freedom, yet you are in power, don't forget. What a liberalized country, what the best society we are. We allowed, whole people allowed you, whole country allowed to come to power, though you did nothing for this country in past. Yet you are in power. And you are thinking you are only honest, you are only national, others are anti-national, students are anti-national, all universities are anti-national, all people who are demanding something are anti-national. You think nobody should speak, people should sleep at home and let you do whatever you want so to do. That cannot work. That cannot work. You may keep your head on Constitution, but you don't respect Constitution, we know.
You may put your head on the steps of parliament, but you don't respect parliament. We know. People know that you are only drama maker. You are only staging drama. You are a performer. You are not a public servant. You are not doing service to people. You are only interested to stay in power. And this is the responsibility. I am saying your actions have not proved till now that you are doing, you are working for this public, for government, for nation. You have not added any value to your system, to this nation. There is no field in today's life in this country where we can say everything is smooth. Economy, you know what is happening to economy. You are just submitting fake data all time. You have been doing that for last 6 years. You know it very well. And you think data submission shall solve problem? Then you are in some other world. You are in some other world. You think you can manage everything using these television channels? Then you are in some other world. If you think you can solve all problems by misannouncement or bad announcements, you are in some other world. Fabrications cannot work everywhere. Drama cannot work everywhere. It may work one time, but it's not constant. It's not continuous. When stomach seeks food, it seeks food, no news, no television. It seeks no information. It seeks food. When you feel cold or hot, you need clothing. That is required. I'm not going to say what you promised you did or not. That's not my criteria at this stage. At this stage, country is boiling. Every field of this country is boiling. There is no field which can be said that it is running very smooth. You take basic field of education, you take basic fields of profession, you take field of commerce, you take field of business, you take field of industry, you take field of defense forces, you can take whatever field you intend to take. Only smooth is political field where there is no work done. There's no work done. Only field is profession of politics. I should say profession nowadays, though it's not profession by its nature, but these political leaders have made it virtual profession. Unfortunately. Problem is, in our country, our youth power has become lazy, has become, you can say, passive. They have no force in them that can push them to be active or to awaken from sleep or to rise on occasion. Just we used to say in some poem, rise for the day is passing. Rise for the day is passing. Rise. Are we rising? We are not rising. Are we complying with Jan Gan Man? We are not complying with Jan Gan Man. We are not able to make our futures. Where we are complying? We are not complying with anything. We are not complying with our constitutional preambles. We are not complying with our fundamental duties. Constitutional preambles say that everybody must be given justice. Everybody must be given equality, and everybody must be given opportunity or liberty, whatever we call it, and brotherhood must be created. Dignity of individuality must be raised. Fraternity must be there. Integrity must be there. And honor must be there. Harmonious atmosphere must be there. But where are we? Just in slogans? Should we live on slogans? Work is always very boring. That is also a fact of life. So, what is work of MP? That is also very boring. But boring or no boring, work has to be done. Why should we bring you people in power? My question is that. Because these problems are not getting solved by these people, so we have to consider. Problems are remaining unresolved, unsolved. Not one, not two, all. Jammu and Kashmir. Problem is continuing. Problems every day augmented. Nobody is serious to think about them. Nobody is in this country to think about them. They are also human beings.
They're also part of this country, but nobody is interested in them. People are not interested in public problems. Every day news keep pouring in, but they just talk in as usual. As usual, everything is well, all is well. Yes, all is well. Which well it is? It is well of happiness, goodwill, or it is well of water, deep well? Deep well or shallow well? Which well is this? You understand what I'm saying? Well means W-E-L-L, which is also water well, which is deep well or shallow well or tube well. Which well is that? All is well. If it's that well, everything is gone with that, you mean? Everything has become well. Or it is well of happiness, well of dignity, well of values. Which well is this? See, what I am talking, maybe you are not grasping in. The fact remains, we are a world of many parameters. We have to understand them very well. And on top of that, we have to understand humanity and human rights. Humanity and human rights are very important. Country doesn't move because of one institution, or because of government, or because of judiciary, or because of legislature. Country moves because of people. People's hard work, people's ambitions, people's actions, people's remaining dynamic. Country moves because of that. But here, there is no field which is propelling, which is in propulsion stage. All fields are falling, all fields are falling. One industrialist recently raised question to our Home Minister, so-called Home Minister. That man said that people will not speak sitting here, they will not speak, but everybody is fearing to speak. That was right question, the right statement, factual statement. Everybody feels, but our Home Minister doesn't feel, our Prime Minister doesn't feel. Answer was, yes, you are wrong. You are raising something and I'm listening to that. What else can you do, Mr. Home Minister? If you don't listen, what shall you do? Shall you kill that person? Shall you throw stone on that person? What else can you do? Why do you want to answer wrongly? You should acknowledge what is said and thank him better, rather than saying no, because you are raising question, there is no problem. And your one just said this question is anti-national. I think you are anti-national because people did a mistake to bring to your power. It's people's mistake. Every time people make mistake in elections, they do not know what people are. This is a big mistake people do. And they keep on continuing that. Because people don't know what they are doing. People don't know what Constitution says. People know elect Prime Minister. They don't know they can't elect Prime Minister. This is because of that. Whole society is in turmoil because of rapes. And why it's happening? Who shall think about that? Only debates in parliament, that's end of game? No. Debate in parliament got no meaning in this case. Because many parliamentarians and many lawmakers themselves are rapists. You cannot get this solved by rapists or criminals. When 233 criminals sit in parliament, in Lok Sabha, you expect them to do justice to you. If you expect them to do justice to you, then you yourself are a mindless person. They are criminals. Court adjudicated or did not adjudicate doesn't matter, because court is very inefficient. All courts are very inefficient. And these days courts are also not interested in logics, the same as. So it is society that has to resolve this problem. I move using metro or others. I find girls and boys of young age
always on mobile, talking to boyfriend and girlfriend. Where are you? I am here. When you are reaching there, I am waiting for you here. Or they are fighting together themselves, talking to each other, talk sense or leave me, I leave you, I stop talking. And they speak in open, in public. So when these boys and boyfriends and girlfriends, they are open in society, their parents are not stopping them, nobody is objecting them, they are acting all this in open in society, hands in hands and arms in arms and like this. I don't mind that. It's your personal life. It's your social life. You like a boyfriend, you like a girlfriend. It doesn't make effect on my health. It doesn't make effect on society as far as it is within some limits. Limits of ethics and limits of goodwill and limits of public decency. It doesn't make different meaning. But if it leads to crime, today you are attracted to someone, you like that one, but you forget that you are not mature person, neither that person is mature. Age of 20, 25, 30, you can say it's not that age which can make you decide about your future. Your parent involvement is very important, social involvement is very important for a smooth life. I am not talking about law. Yes, you are 18, you are 20, and you have every right. But right is linked to responsibility also, duty. You have to see that it's not simply right that you are giving duty also. If you can have right of your girlfriend and right boyfriend and their affairs, but what about responsibility in future? You have to take this into your consideration. Yes, physical attraction was part, but mental attraction and spiritual attraction and social attraction and national attraction is also your duty to comply by or to accept. What happens? Internet is available on every mobile. People are all having mobile. There may be office girls or there may be students or university. All boys and girls are these days moving as if they are one unit. I think I don't find a single girl or single boy somewhere. Hardly even if they are there, they're waiting for their other partners. See, whatever they want to do, it's up to them. I'm not going to talk of that. They may marry, they may not marry, they may be living or they may not be. It's none of society business. But question is, if that results in crimes, if that results in some anti-social activity like rape and nowadays what's happening is not simply rape, it's rape and murder. You rape and then murder also. That is a sequence one. It's a double activity, not single activity. Because you know if you have raped someone, you will not be forgiven by law. So better kill that person. So this has been, you can say, extension of one crime to another crime. If we are building this type of society and we are not noticing it, what shall we do? Simply saying hang him, beat in public, burn him, or punish him to death. Yes, these are opinions. When you are angry, you will say that. But question is, how many you will kill? Question is, where is problem? Where is location of problem? And for what that? What's the basis of that problem? That is very important to be researched, to be thought of, to be innovated. Means there is something. And that is, these boys and girls think they are free from any problems. And I think their parent may support it as well, probably, because parents too are busy. Everybody is burning and making money, improving economy, and keeping these kids afar. Keep them distance from the spiritual context or physical context. When these people are apart from this parent or society, they shall decide themselves right or wrong, they won't know. They cannot differentiate what's right and what's wrong between two. That's the reason that something is happening, because they are deciding themselves when they are not in a position to decide. They don't know responsibility, they don't know obligation, they don't know liability, yet they are going to decide for something. And fine, who are you to tell us how to love or not to love? This is our business. You will teach us what to wear, what to wear. You will teach us that. It's our business. What to do. Who are you? Are you police on that? That question generation also very right. This is the right question, because this is this country like yours is in this country. So
Who will solve this? Who will scientifically make this social engineering, social science? You can say it's a part of social science. Means if you are talking of professionalism everywhere, why not to talk of professionalism society for social actions? I am not saying boyfriend or girlfriend are bad relations. These are relations. No problem. I respect them. For support, for life building, for career building, for future prospects, for interactions, for inter-opinions building, and for having ethics in society, that is good relation. Nobody minds that because you are educated person, you are grown up, you can think of yourself, you can seek advice from others, your parents and from your other people. You can that. But if this leads to crime like rape or murder post rape, I think there's something wrong. There is certainly something wrong. And that is where we have to find. No foreigners shall come to teach us this. We have to find ourselves. And we have to find solution, permanent solution. Just simply saying make a law. Law making won't help it because law is already there. Question is preventive measure. That is more important. I'm not saying every day everyone is raping. It's happening. It's happening not only in one state, in many states it's happening. So we have to check where we are wrong, where error has come in. This is very important, but it's not being solved. It's not being solved. So who shall solve it? Society shall solve it in support with government and judiciary and legislature. Forget credit on such issues. I will get credit that I did it and I did that. It's nothing to do with credit. It is national responsibility. It is social responsibility. It is people's responsibility. Forget your credits and debits. Credits and debits do not work everywhere. If our money is looted, you can think of. But if your respect is being looted, your honor is, your modesty being looted, you are left nowhere in your life. Rape is not new in whole world. It's well known. But why no solution till now? It's a question. Then you go to economy. Economy, a devil standing on our head. Devil, I should say devil, because I call it devil. Recently now, mobile prices are 40% raised. This means 40% you will charge more and you will compensate your losses. People may not afford, all people, few may afford, few may not afford. But this is clear indication that economy is drum beating. It is in turmoil, it is in fire. Economy is in fire. Government is selling government companies. No business in market. Shopkeepers are sitting idle, my business is 80% down. Factories are part-time working now. Government is not serious at all. They think everything shall improve itself. This is government thinking. Government thinks everything can improve itself. I can't understand how it can be improved by itself. No way. Who shall solve this problem? Economy, education, medical is another problem. Health. Health is wealth, we used to say. But we could not understand that time. Health is wealth. But now I understand. Health is wealth. Because if you are sick, you go to the hospital in private sector, you'll be admitted, and after 10 days you'll find a bill of maybe 25 lakhs. This means
From where shall you bring these 25 lakhs or 13 lakhs? Everybody cannot have this much money for medical. You may say, I have medical insurance, medical claims, I can manage this. But that too is limited. That's not full. Can you think everybody can afford that? No, everybody cannot afford that. My again question remains same question. There was a news yesterday, railways. Railways are showing some surplus, but they are not showing there's a loan from others. So there's an extension of funds from some other companies. Otherwise, railway should have gone to losses. Companies are in losses or in profits. Government railways are losses or means what is happening? After all, we have to ensure what government executive is doing all these times. I know if I run a company, or even if I work in a company, I have to work a lot. I have to think for that company. I have to think for a project. I have to think for every material purchase. I have to think for government and all government accesses and government requirements and all that. It's not one thing. It's a group of requirements to meet. It's not one simple approach. We have to be very careful. It's not easy to govern. It is very easy to come to power, to government. Coming to government is not same thing as working as government. Coming, coming to government is by people. Coming to MP is by people. People can bring you MP. People are very soft. People are very sentimental, and they just think for current times, and they believe in promises. They believe in promises. They don't believe in facts. They believe, oh yes, this man is good. He thinks for nation. He may solve our problems. This is trust. This means innocent people, they trust some people, some parties, and that is only reason they vote. But do our leaders that trustworthy? A question should be raised to yourself. Is your leader trustworthy to whom you are voting or you have voted? If you think that is enough, that is enough. But no, no, no. People do not consider this question. They don't consider this question. It's not their fault as well. People's fault is they do not know what is procedure and what is written in system. Because our people were not very well theoretically educated, academically educated before, and now too. They may be educated, but they are sleeping. They do not know why this right with me and what is the responsibility on this right. What is my responsibility according to Constitution? Why these responsibilities are there? No such thinking because we sleep. I have seen people sleeping 12 hours a day, 10 hours a day, 9 hours a day. Educated, high class educated people. That is physical sleep. That is required. But while you are not sleeping physically, even then you are sleeping. Because you are ignoring everything. You are leaving it to politicians. Again, the same thing comes in. If that's the point, you yourself are politicians. You use your power. Be politicians. Why do you support such politicians? If I say I have to support Congress or I have to support BJP, say, or whatever, I have to support, that's fine. But why should I support this party or that party? Why? What is specific about those parties? What they have done for this nation? This is a basic question every vote should ask. What reason for why this vote is? हमारे देश में जो आज हो रहा है भारत में, हमारे प्यारे भारत में, जनगण मन वाले भारत में, भारत भाग्य विधाता वाले भारत में, वंदे मातरम वाले भारत में, हमें सब में बोलूंगा, सत्यमेव जयते वाले भारत में क्या क्या हो रहा है आप किसी से छुपा नहीं है।
जब तक आप जागे हुए हैं। टेलीविजन चैनल आपको सब नहीं बता सकते, क्योंकि वो टेलीविजन चैनल हैं, उनको अपनी दुकान चलानी है। उनको आपकी क्या समाचार देते हैं, आपको क्या समाचार नहीं देते हैं, इससे उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका काम है सुबह से शाम तक आपको भ्रम में डाले रखना। क्या उनका काम? इसी बात के पैसे लेते हैं। आप उनको फोर्स भी नहीं कर सकते कि आप ये दिखाइए या ये मत दिखाइए, क्योंकि वो पब्लिक चैनल्स हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं आप अपना दिखाइए जो दिखाना है, लेकिन पैसे तो आप मुझसे भी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, जब आपने अपनी ही मर्जी करनी है? अब मेरे अकेले से ये बात करने से तो बात शुरू होगी नहीं। ये तो सब पब्लिक मिलकर अगर ऐसी बात करेगी तो बात की जा सकती है। देश कहाँ खड़ा है, कहाँ होना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, हमारे लीडर्स जो बैठे हैं उनका क्या उत्तरदायित्व है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करना चाहिए उनको, वो तो बताएंगे वही, लेकिन हम तो समझते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। प्रश्न तो यही उठता है, आखिर लीडर्स का मतलब क्या है? भारत जैसे देश में लीडर का मतलब क्या है? नेता किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं हम नेताओं को? एक प्रश्न आप सोचिए। कब तक सोते रहेंगे आप? कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे इन नेताओं के हाथों में, जो बनाते रहेंगे आपको बेवकूफ? आफ्टर ऑल नेता मैं क्यों बनाऊं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? आप कहेंगे देश नहीं चलेगा, रुक जाएगा। ठीक है, इनके होता हुए भी तो नहीं चल रहा। इन्होंने क्या किया? नेता, लीडर, अब तक ये नहीं समझ आता कि नेता स्वयं को लीड कर रहे हैं या नेता पब्लिक को लीड कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, नहीं समझ आता, मेरी समझ नहीं आता। आप सोचने की शक्ति रखते हैं तो सोचिए, आखिर हम नेता क्यों बनाए? हमें क्या हो गया है कि हमें इनकी आवश्यकता है? और अगर इनकी आवश्यकता है तो हम आंख मीच के बनाएं इनको? वो कहा जाता था एक समय में, जब हम छोटे थे, इंदिरा गांधी के इलेक्शन होते थे समय में, ये तो जीत जाएगा, ये कहावत थी। इंदिरा गांधी गधे को भी बिठा देगी तो वो जीत जाएगा, क्योंकि वो इंदिरा के नाम पे जीतना है, अपने नाम पे नहीं जीतना है। तो आज भी शायद वही हाल है, मोदी या ये जिसको बिठा देंगे वो जीत जाएगा या हार जाएगा, क्योंकि मोदी के नाम पे वोट मिलना है या कांग्रेस या बीजेपी के नाम पे वोट मिलना है। ये सच बात है, लोग ऐसा ही सोचते हैं। अरे आएगा तो मोदी ही। देखिए कितना विश्वास है अपने ऊपर कि उन्हें आएगा तो वो ही, कोई मोदी आएगा। वो ये नहीं सोचते कि मोदी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है संविधान के हिसाब से, वो आपसे कोई लेना देना नहीं है उसका, वो आपका आपका नुमाइंदा नहीं है, वो आपका क्या कहते हैं हिंदी में, आपका वो एजेंट नहीं है। आप उसके मालिक हो, लेकिन वो आपका मालिक है। संविधान के हिसाब से मोदी या पीएम से आपका कोई लेना देना नहीं है। संविधान साफ साफ कहता है कि आपको पीएम नहीं चुनना है, आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम कहते हैं लोकसभा में बैठने वाला, उसको चुनना है। और हम ये बात मानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं हम लोग। हमारे ज्ञान की असीम सीमा है, असीम ज्ञान है हमारे अंदर। कर देते हैं चुनाव, चुन देते हैं आदमी को, आ जाता है सत्ता में, उसके बाद फिर चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं सालों साल, 5 साल तक की। अब चिल्ला रहे हैं जैसे, अरे भाई, मेरा प्रश्न आप सबसे है, आपने वोट किसको दिया था और क्यों दिया था? आपको ध्यान है? आपको ध्यान है क्या? आपने दिया था सोच के वोट कि ये आदमी आ गया तो देश का भला होगा।
आपकी सोच अच्छी थी, अति सुंदर सोच थी आपकी कि आप देश के बारे में सोच रहे थे कि देश का भला होगा। लेकिन आपने यह कैसे सोच लिया था कि यह आदमी आएगा तो भला होगा? ऐसा आपके पास क्या फार्मूला था कि आप लोगों ने ये मान लिया कि ये आदमी आएगा तो देश के लिए अच्छा काम करेगा? ये कैसे सोचा आपने? मेरे हिसाब से यही सोच गलत है। यही सोच गलत है हमारे देश में कि हम एक आदमी के पीछे बैठ जाते हैं कि ये देश चला लेगा और अच्छी तरह से हमारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेगा। माना आपकी बात ठीक है, थे ऐसे लोग पहले जो देश को हैंडल करे, जिन्होंने गांधी, सुभाष, नेहरू वगैरह वगैरह थे लोग ऐसे। लेकिन आज गांधी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है गांधी को एक आम भाषा में? यही लोग क्या कहते हैं जो सत्ता में बैठे हैं? ये गांधी को अपना नहीं मानते, गांधी की फोटो को अपना मानते हैं, गांधी की मूर्ति को अपना मानते हैं, लेकिन ये गांधी को अपना नहीं मानते। अपना मानते होते तो गोडसे को देशभक्त नहीं कहते। गोडसे तो सबसे बड़ा देशभक्त है उनके नजरों में। गोडसे जिसने गांधी की हत्या की, जिसने गांधी को मार दिया धोखे से, उसको देशभक्त कहते हैं हम। वाह, क्या सोच है! भारत की सोच ही बदल गई। जो किसी का मार दे, किसी का मर्डर कर दे, हमारे नेता का, जिसने हमसे अंग्रेजों को चुंगल से छुड़ाया, उसको मारने वाले को हम देशभक्त कहते हैं। और कौन कहते हैं? जो संसद में बैठे हैं वो कहते हैं, जिन पे 36 तरह के क्रिमिनल इल्जाम हैं वो कहते हैं। और हम सुनते रहते हैं, हमारे सबसे बड़े नेता सुनते रहते हैं। उन्हें कोई शर्म नहीं है आती कि हम ऐसी बात क्यों सुन लें? एक ऐसे आदमी की तारीफ हम क्यों सुन लें जिसने गांधी को मारा? क्यों सुन लें उसकी तारीफ हम? ये नहीं सोचते वो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, सब कुछ गिर रहा है। सोच गिर रही है, काम गिर रहा है, हेरा फेरी बढ़ रही है और पैसा चोरी हो रहा है, हो रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। हम किसी प्रॉब्लम की तरफ देखते ही नहीं। सोल्व तो क्या करेंगे, हल तो क्या करेंगे उसका? अरे कुछ सोचेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ लड़ाई करेंगे, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं तो कभी नहीं हो सकती सॉल्व। वो बढ़ती रहेगी। आग जब लग जाती है तो क्या आप बातें करते हैं? क्या आप जलसा करते हैं? क्या आप धरना देते हैं कि आग बुझाओ? नहीं, धरना दे नहीं सकते आप। वहां तो वैसे ही इतनी गर्मी होती है जहां लग जाती। तो क्या किया जाना चाहिए? उसका क्या करते हैं आप? वही आपकी देश की समस्या है। आपका देश जल रहा है, आर्थिक रूप से जल रहा है, सामाजिक रूप से जल रहा है, सिस्टम के रूप से जल रहा है, लोकतंत्र जल रहा है, पंथ निरपेक्षता जल रही है, सॉवरेनिटी जल रही है। क्या नहीं जल रहा है? दिमाग जल रहा है, शरीर जल रहा है, आत्मा जल रही है, मेरा देश चल रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है। जब कुछ जल रहा है तो क्या करते हैं? सोचिए क्या करते हैं? उस जलाने के ऊपर पेट्रोल डालते हैं या मिट्टी का तेल डालते हैं या उसको बुझाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से या फोम से या पानी से। क्या करते हैं? जब जलती है आग, लगती है आग, तो बुझाया जाता है कि नहीं? उसको कैसे बुझा देते हैं फिर हम? पूरा देश जल रहा है एक ऐसी लड़ाई में जिसको हमें खत्म करना होगा। राजनीति के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि राजनेता सिर्फ राजनेता होते हैं। ये अभिनेता से बढ़ के अभिनेता होते हैं। इन्होंने करना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करना होता। सब राजनेताओं के बारे में कह रहा हूं मैं, एक के बारे में नहीं कह रहा हूं। वो चाहे सरकार में बैठा हो या विरोध में बैठे हो, उन्हें कोई नहीं पब्लिक से लेना देना, कोई नहीं लेना देना, कोई नहीं लेना देना। राजनेता का मतलब होता है मक्कार,
मक्कार होता है राजनेता, नकारा होता है राजनेता, झूठा होता है राजनेता, जो अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला होता है राजनेता। वो राजनेता नहीं जो मेहनत करे, वो राजनेता नहीं जो ईमानदार हो, वो राजनेता नहीं जो सोचने की शक्ति रखता हो, वो राजनेता नहीं जो चुपचाप काम करता हो और लोगों से काम लेता हो। उसको राजनेता आप नहीं कह सकते, वो बेवकूफ कहलाता है। आज के जमाने में जो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है वो बहुत बेवकूफ भी होता है, क्योंकि लोग अच्छे लोग नहीं चाहते। और ये राजनीति वाले तो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं चाहते। ये तो चाहते इनके साथ यस मैन होने चाहिए, इनके साथ वो लोग होने चाहिए जो बात ना करें उनसे, पूछे नहीं उनसे। 545 आदमी लोकसभा में और 250 आदमी राज्यसभा में, वो करते क्या है? क्या करते हैं? बहस, बिना बात की बहस। कोई नहीं सोच रहा कि देश में क्या हो रहा है, कहां झगड़ा हो रहा है, कहां प्रॉब्लम हो रही है। किसी को कोई चिंता नहीं। एक प्रश्न रोज से रोज उठा दिया, क्वेश्चन उठा दिया, थोड़ी देर बहस कर ली, डिबेट कर ली, उसके बाद ताला लग गया, बात पे बात खत्म हो गई। क्या करेंगे उस डिबेट का हम लोग? क्या फायदा उस डिबेट का? इसका कोई रिजल्ट रहा है? क्या फायदा उसका? गवर्नमेंट ने तो अपनी चलानी है, कोई भी बात हो हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं एक्शन लेंगे, जो करना है कर लो। जब गवर्नमेंट ऐसी हो जाए और जब विरोधी दल विरोध ना करें, लड़ाई ना करें, याद रखना विरोधियों, सबसे गद्दार तुम हो। आज की देश में अगर कोई सबसे ज्यादा गलत है तो विरोधी दल गलत है, क्योंकि वो सरकार को कूट नहीं रहे, सरकार को सही से पूछ नहीं रहे, सरकार का घेराव नहीं कर रहे, पार्लियामेंट का घेराव नहीं कर रहे, सरकार से पूछने की जबरदस्ती नहीं कर रहे, जो उनका काम है। प्यार प्यार से बात करेंगे, आराम आराम से बात करेंगे। क्यों? एक आदमी डकैत आ गया आपके घर में, उससे आप आराम से बात करोगे या उसकी गर्दन पकड़ लोगे? क्या करोगे आप? एक रेप होता है तो आप आराम से बात करोगे? चिल्लाओ, एक्शन लो। नहीं, आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी किसी का रिश्तेदार निकला, वो भी किसी पार्टी का निकला रेपिस्ट, वो चोर भी किसी पार्टी का निकला। आप एक्शन नहीं ले सकते। काले धन की बड़ी बड़ी बातें होती थी। काला धन किसका है वो नहीं पता किसी को, लेकिन है। अभी तक तो उसका अता पता नहीं है। मुझे नहीं पता कहां है मेरा काला धन। बातें बातें बातों का क्या, बातें हैं ये बातों का क्या। कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं कि फिल्में याद आ जाती हैं। ये बातें हैं बातों का क्या। तो ये राजनीति है, राजनीति का क्या? ये नेतागिरी है, नेतागिरी का क्या? जब हमारे नेता और हमारे वोटर आगे बढ़ के अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। एक आदमी आपका 70-75% पैसा लेके बैठ जाता है अपने आप को इंडस्ट्रियल्स के नाम पे, और आप उसके चरणों में नमस्कार करते रहें। वो देश के सारे फैसले करा दे, पार्टियों को पैसा दे दे के खिला दे, और आप रोते रहें, रोते रहें, रोते रहें। देश सबका है ये हम मानते हैं, लेकिन कहने के लिए बस ये देश मेरा है, मैं वोटर हूं, मैं नागरिक हूं। क्या जाता है कहने में। देश तो उनका है जो सीट पे बैठे हैं, जो मौज मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। कोई पूछता है 5 साल का हिसाब दीजिए, 5 साल का हिसाब दीजिए, आपने क्या किया 5 साल में? तो वो कहते हैं पहले आप 55 साल का हिसाब दीजिए, आपने क्या किया, हम तो 5 साल का हिसाब देंगे। आप 55 साल का हिसाब मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? पब्लिक से। आज जो सामान आप बेच रहे हैं मार्केट में, वो कहां से आया? वो कहां से आया? वो
वो लंदन वाला दे के गया आपको, या गल्फ वाला दे के गया, या अमेरिका दे के गया? कौन दे के गया वो आपको? वो इसी पब्लिक का है जिसकी आप मार्केट में बैठ के सेल लगा रहे हैं, एक के साथ एक फ्री। वो इसी देश का है, इसी देश की पब्लिक का है। इस देश की पब्लिक के खून पसीने की कमाई है, लेबर की, वर्कर की, फैक्ट्री वाले की। सॉरी। आपके खानदान का नहीं है। जो आप कह रहे हैं 55 साल का हिसाब दीजिए, आप दीजिए 1925 से 1947 तक का हिसाब। आपने क्या किया था? आप देंगे? दीजिए हिसाब। मैं पूछ रहा हूं आपसे। आप जो बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया, आपने क्या किया? आप क्यों नहीं बच्चों को पढ़ने दे रहे, बताइए। आपके बाप का क्या ले रहे हैं वो? पब्लिक का टैक्स है, पब्लिक की यूनिवर्सिटी है, पब्लिक के एडमिशन होते हैं, पब्लिक के बच्चे हैं। क्या वहां पाकिस्तान के बच्चे पढ़ते हैं? आप हर बात को पाकिस्तान के लाते हैं खींच के, तो हम भी पाकिस्तान को खींच के लाएंगे। क्या उन यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान से पढ़ने आ रहे हैं? जवाब दीजिए। क्या उन यूनिवर्सिटी से सऊदी या यूएई से पढ़ने आ रहे हैं फ्री में? जवाब दीजिए। आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं वो भी बताइए। आपको तो बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने बात खड़ी हो कि पूछ रहे हो, पूछ सकते हैं सब, तो पूछ रहे हैं आपसे। अगर आपने कहा है कि पूछ रहे हैं सब मुझसे, इससे डर नहीं है, तो अब हम भी डरते नहीं हैं आपसे। बताइए, आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? वो पैसा कहां से आता है? आप क्या जानते हैं? आपने कहां से पढ़ाई की है? कहां से पैसा आया था? हम भी पूछेंगे आपसे। आपका एक मंत्री करोड़ों रुपए भा देता है दिया जलाने में, हम पूछेंगे क्यों जलाया गया, क्या उससे फायदा हुआ टैक्स पेयर का? हम पूछेंगे। क्या पैसे इन सब चीजों में लगाने के लिए होते हैं? पूछेंगे नहीं है? आखिर पैसा तो हमारा है। आपने खुदाई करके तो नहीं कमाया, आपने फैक्ट्री में मेहनत करके नहीं कमाया, जनता के टैक्स से आप चल रहे हैं। आप जी रहे हैं टैक्स से, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज में आप यात्रा कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि कोई डर नहीं है, हम किसी को डराते नहीं हैं। आप नहीं डराते तो आप जवाब भी नहीं देते, आप जेल में भी डलवा देते हैं, आप उनकी जमानतें भी नहीं होने देते, आप कोर्ट को भी दबाव डाल देते हैं। फिर आप कहते हैं हम नेता हैं। नेता आखिर होता क्या है? नेता, नेतान्याहू तो इजराइल में है। आप कौन से नेतान्याहू हो, ये बता दीजिए। मुझे ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं देश में, जो जनता की बात भी सोच सोच के करें। बस पार्लियामेंट में शोर मचाने से देश नहीं चल सकता। देश चलाने के लिए तो लड़ाई भी करनी पड़ सकती है आपस में। जब देश चलाने की प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं, तो सब कुछ ये नहीं होता कि सरकार कुछ भी कर ले। सरकार भी सरकार ही होती है, पार्लियामेंट भी पार्लियामेंट ही होती है, असली तो जनता होती है। अगर कोई मान लीजिए किसी नेता की कुटाई कर देता है तो देशद्रोही हो जाता है। देखिए, आप कोई आएगा गुस्सा तो क्या करेगा बताइए। आप कोई समस्या पे सॉल्व नहीं कर रहे। पिछले 5 साल ऐसे निकल गए। हम तो कांग्रेस की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत गलतियां की, हम नहीं कहते कि वो सही थे, लेकिन आज बात कांग्रेस की नहीं है, आज आपकी बात है। हमें आशा थी कि आप एक अच्छे समझदार हैं, आपके मिनिस्टर समझदार होंगे, वो देश के बारे में सोचेंगे, समस्याओं के बारे में सोचेंगे, अध्ययन करेंगे, कुछ उनके हल लाएंगे, जो कि एक नेता का कर्म होता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, दिख नहीं रहा। ऐसा क्यों?
क्या आप बिल्कुल अनपढ़ हैं? आप कुछ भी नहीं समझते? अगर ऐसा भी है कि आप कुछ नहीं समझते, तो फिर तो आपको अधिकार ही नहीं है इन सीटों पर बैठने का। कोई आपसे वोट की बात करता है, ईवीएम की बात करता है, तो आप उसे फेंक देते हैं परे को। लेकिन बात तो सच है, ड्यूटी बनती है आपकी, आप सरकार हो। प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप जवाब नहीं देते, और ना ही चुनाव आयोग जवाब देता है। आखिर क्यों? प्रश्न ना पूछे, आपने क्या किया क्या नहीं किया सब जानते हैं। प्रॉब्लम होती है सबूत नहीं होता, यही प्रॉब्लम होती है। सब जानते हैं कि 40 लाख ईवीएम रिसीव की गई, लेकिन उनके पास 20 लाख पहुंची, 20 लाख कहां गायब हो गई कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। 373 ऐसी चुनाव की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जहां की जितने वोट डाले गए और जितने गिने गए उसमें 5,000 से लेके 18,000 तक का फर्क निकला। ये सब जानते हैं कि कम से कम लाखों मशीनों पे, 3 लाख मशीनों पे इन्वेंट्रीज के नंबर सही नहीं थे। ये बातें सब जानते हैं। कितनी मशीनें चेंज की गई इलेक्शन 2019 में, कोई हिसाब किताब नहीं। ये किसकी जिम्मेदारी है? आप कह देंगे चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, तो आप चुनाव आयोग से खुद पूछिए। ये भी आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी, आप सरकार। आज तक पब्लिक को आंसर नहीं मिला। और जहां तक अदालत की बात है, कोर्ट की बात है, न्यायालय की बात है, उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने तो सरकार के ही हिसाब से फैसला करना है। आज की तारीख में वो सरकारी न्यायालय बन चुके हैं। ज्यादातर सरकारी न्यायालय, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही हुआ। यहां तक कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी उसी में घुस गया। वो भी अब स्वतंत्र दिखता नहीं बहुत केसेस में, जिसमें ईवीएम का भी केस शामिल है, जिसका गौर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था। जम्मू एंड कश्मीर का केस है, गौर नहीं किया हमारे कोर्ट ने, करना चाहिए था। और जहां तक राम मंदिर का इश्यू है, वो भी कोर्ट ने गवर्नमेंट के दबाव में फैसला किया। सच तो यही है। अब कुछ भी कहते रहें, जब लीगली आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे किसी चीज को और आप जजमेंट दे रहे हैं, तो गलत। इसका मतलब यही है कि आपको फोर्स है। आपने ऑर्डर तो किया, जजमेंट तो दिया, लेकिन स्पीकिंग नहीं था पूरी तरह से। स्पीकिंग तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। वो जजमेंट स्पीकिंग इसलिए नहीं था। स्पीकिंग का पहले सुन लीजिए मतलब क्या है। स्पीकिंग का मतलब होता है हर चीज की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, उसमें कितनी हिस्ट्री हो, कितने ही उसमें प्रश्न आए हो, कितने उसके रिस्पॉन्सेस आए हो, और क्या सही आए क्या गलत आए, हर चीज का रिटर्न में होना चाहिए। उनके बैकग्राउंड होने चाहिए, और जो फैसला आप कर रहे हैं, जो वहां पे गवाहियां साक्ष्यां आई है, उनकी पूरी तरह से लिखा होना चाहिए, उनके मतलब को समझना चाहिए। और उन सब के ऊपर संविधान क्या कहता है, या हमारा हमारा साक्ष्यतर कानून क्या कहता है, एविडेंस एक्ट क्या कहता है, वो सब उस पर लगकर आंसर उसमें आने चाहिए, जिससे कि एक आम व्यक्ति समझ जाए कि ये फैसला यदि या जजमेंट दिया गया है, ये बिल्कुल रीजनेबल है, बिल्कुल लॉ के हिसाब से। वो होता है स्पीकिंग जजमेंट। लेकिन यहां तो स्पीकिंग जजमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं तो जज ने, पैनल ने गवर्नमेंट के फोर्स में आके काम किया, क्योंकि कोई भी 5 जज गलती नहीं कर सकते जहां तक मैं समझता हूँ। बड़े बड़े जज, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस, ऑनरेबल जस्टिसेस, वो इस तरह की गलती नहीं कर सकते। पर यहाँ तो एक तड़ी मारी जाती है कि यूनानिमस जजमेंट था। इसका मतलब यूनानिमस फोर्स थी, और वो यूनानिमस रेजिस्टेंस था नहीं उनके पास। एडजॉर्प्शन पावर थी, चलो करने दो यार, ये नहीं मानती सरकार तो हम मान लेते हैं इनकी बात को। हाँ, एक भी डिसेंट होता या 2 भी डिसेंट होते, हम मान लेते कि फोर्स नहीं थी। पांचों एक भाषा बोल रहे हैं, एक ही पेज पे बोल रहे हैं, अलग अलग भी नहीं लिख रहे हैं, तो पक्का माना जाएगा कि उनके ऊपर दबाव था और था। खुल्लम खुल्ला कहा जा सकता है, ये बात साइकोलॉजिकली एडमिसिबल है।
एक लैंग्वेज कैसे मानी जा सकती है? नाम भी ना लिखा हो ऑथर का और शक पैदा करता है, और सप्लीमेंट लगाना और ज्यादा शक पैदा करता है। अब हम ये नहीं कह रहे कि उसका क्या फ्यूचर होगा, वो हमारा काम नहीं है कहना, हम तो कमेंट कर रहे हैं। आगे क्या जज का फैसला होता है उसको लेके आगे चलते हैं नहीं चलते, वो बात हम नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देश की हालात क्या है। भारत भाग्य विधाता, वो भाग्य विधाता कहाँ है? वो जिसने हमारा भाग्य लिखना है या ठीक करना है वो कहाँ गया? हम तो उसको ढूंढ रहे हैं। हमारी सरकार हमारी भाग्य विधाता नहीं बन पा रही, बनना चाहिए था लेकिन नहीं बन पा रही। राष्ट्रीय गान तो यही कहता है, हम भारत भाग्य विधाता हैं, तो हम अपना भाग्य तो पार्लियामेंट के थ्रू बनाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू बनाते हैं, और वहां उनकी जो कार्रवाई की जाती है सरकार द्वारा की जाती है, हमारे एमपी द्वारा की जाती है। तो हमारे एमपी कुछ नहीं कर रहे, हमारे सरकार कुछ नहीं कर रही हमें भाग्य बनाने के लिए, तो क्या कह सकते हैं ऐसे हालात में हम? बहुत बड़ा इश्यू होता है अगर आप सोचें तो। हमारे देश के छोटे बच्चे आजकल, पढ़े लिखे युवा या थोड़े आगे बढ़े हुए लोग शायद सीरियस नहीं है इन बातों के लिए, वो कोई सीरियसली नहीं लेते इन चीजों को। सीरियसली लेते तो ये बात नहीं होती। इंटरनेट ने बुखार चढ़ा रखा है सारी पब्लिक को, पब्लिक अब्यूज कर रही है उसका, और खास तौर से जवान लड़के लड़कियां बहुत अब्यूज कर रहे हैं। मेरी सलाह है कि देखिए ये सब एक्सेस में ठीक नहीं होता है, ज्यादा भी कोई चीज की जाए तो वो कई बार गलत रास्ते पे चली जाती है। पढ़ने की जिंदगी होती है स्टूडेंट की, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, इंस्टीट्यूशंस में हो, कहीं भी हो, पढ़ना पढ़ना होता है। ठीक है, थोड़ा टाइम पास करने के लिए कुछ गलतियां लोग कर देते होंगे, लेकिन उसको आप लाइफ का इश्यू मत बनाओ, एंटरटेनमेंट की तरह ले लो। लेकिन पढ़ाई जरूरी ज्यादा होती है। आप पढ़ाई करें अच्छा है, आगे बढ़े अच्छा है, लेकिन अपनी शक्ति को खराब मत कीजिए। लेकिन अभी आप मैच्योर नहीं हुए हैं क्योंकि आप छोटी उम्र के हैं, इसलिए शायद आपको एकदम ये बात समझ नहीं आएगी। लेकिन अब तो इतना कुछ हो चुका है, इतने रेप हो चुके हैं, इसका हिसाब किताब नहीं है, उनकी कोई कार्रवाई हो नहीं हो कोई नहीं जानता होगा। इतने रेप हो चुके हैं, बड़े बड़े नेताओं के बच्चों के साथ ऐसे हुए हैं कि उनके लड़कों ने दूसरी लड़कियों का रेप किया। खैर वो बात तो अब छोड़ो, वो जो आने वाले होंगे लोग देखेंगे अपने आप। लेकिन मेरा विषय कुछ और था कि आखिर हम जा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, यही तो सवाल उठता है। सामान बेच दो हमारा, सब कुछ बेच दो हमारा, हमको भी बेच दो हमसे उठा के। दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। हम भारत के लोग हैं, हमने भारत को बनाया है, हमने यहाँ स्वतंत्रता दी है सबको, हमने यहाँ इंसाफ देना है सबको, हमने बराबरी देनी है सबको। कि कहाँ है वो बराबरी? कहाँ है वो हरे हरे खेत जहाँ फसलें उगती हैं और सबका जीवन मिलता है? कहाँ है वो चांद की रोशनी? कहाँ है वो समुद्र ठंडी हवा वाला मुलायम जिसको कहते हैं मुलायम शीतलाम? कहाँ है वो सुफसलाम फलम शुद्ध फल अच्छे फल पावरफुल? कहाँ है, कहाँ है शिवजलम? कहीं ढूंढते मिलता है आपको? खून मिलता है, रेप मिलते हैं, चोरी मिलती है, डकैती मिलती है, रॉबरी मिलती है, बैंक की लूट मिलती है, झूठ बोलने वाला नेता मिलता है, झूठ की रैली मिलती है, सब कुछ झूठ मिलता है, आग मिलती है, सब मिलता है, कोई बुझाने वाला नहीं होता। कहाँ है वो सब? कहाँ चले गए वो दिन? कहाँ गई वो हरियाली? कहाँ गई वो फूलों की खुशबू? कहाँ गए वो परिंदे? सब चले गए, एक कल्पना हो गई। खींचा तानी हाहाकार, किसी को जॉब नहीं, किसी को खाना नहीं, किसी का ठेले पे सामान नहीं बिकता, किसी की दुकान नहीं चलती, बिजनेस बंद है, सब कुछ बंद है। देश चल रहा है, तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। क्या बात है, कैसी सरकार बनी है, अपने आप चलता जा रहा है, सारी दुनिया में सबसे आगे हो चुके हैं हम, हमारे पीछे चल रहे हैं सब लोग। ख्याली पुलाव खाने के लिए नहीं होते, सपने के लिए होते हैं। ख्यालों की दुनिया खाने के लिए नहीं होती, सोने के लिए होती। ख्यालों में रहेंगे, ख्याल रहेंगे, ख्याल के लिए रहेंगे, यही होगा। सोचते रहिए भविष्य के बारे में, विजन में रहेगा, स्वप्न में रहेगा, मिलेगा कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं आएगा। किस्मत वाले हो कुछ लोग जिनको मिल जाए, जो नहीं मिले तो वो बदकिस्मत हैं, लेकिन नालायक नहीं होने चाहिए।
हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, सरकार बढ़ने देना नहीं चाहती। अगर ये ज्यादा बढ़ गए, पढ़ गए, लिख गए, संविधान को समझ गए, तो मेरी आके मिट्टी पलीत कर देंगे ये लोग। मैं मिट्टी पलीत क्यों कराऊं? मैं क्यों कराऊं? जब तक ये समझदार होते हैं, जब तक ये क्रांतिकारी होते हैं, थोड़े आगे बढ़ना जानते हैं या बढ़ सकते हैं, तब तक मैं इनका एग्जिस्टेंस ही खत्म क्यों ना कर दूं? ना होगा बांस न बजे की बांसुरी। एक बड़ा बहाना चल रहा है आजकल, सरकारी लोग काम नहीं करते इसलिए हम ये कंपनियां बेच रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई, सरकारी लोग काम नहीं करते। ये आप सरकारी लोगों की इनएफिशिएंसी बता रहे हैं कि अपनी बता रहे हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा। सरकारी लोग काम नहीं करते तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है काम लेना? क्या मेरी जिम्मेदारी है या किसी दूसरे की जिम्मेदारी है, या जो उनको पैसे दे रहा है उनकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है ये? जिस एम्प्लाई को पैसे जहां से आ रहे हैं वो जानता है वो एम्प्लाई के पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसी हिसाब से वो अटेंशन देता है काम पे। अगर कोई वैसा आके कोई बैठ जाए ऑफिस में गेस्ट वाला, उसकी बात को ध्यान नहीं देगा। पक्की बात तो यही होती है, लेकिन हम इस चीज को भी नहीं मानते। हमने कसम खा रखी है, हमने जो कहना है वही कहना है, वो चाहे गलत हो या सही हो। गड्ढे 70 साल के भरते हैं हम, गड्ढे 70 साल के भरते हैं हम। अरे आप गड्ढे भर रहे हो या गड्ढे खोद रहे हो, आपको भी नहीं मालूम। अगर 70 साल के गड्ढे 5 साल में भी नहीं भरे गए तो आपको गड्ढा भरना नहीं आता। आप नहीं जानते गड्ढा कैसे भरा जाता है, बल्कि आपने गड्ढे और गहरे कर दिए, और गहरे कर दिए, और चौड़े कर दिए। यही आपने किया है। खुशहाली होनी चाहिए तो लोगों में, खुश होना चाहिए था लोगों को। देखो कितने अच्छा हमारा काम चल रहा है, हमारी एजुकेशन चल रही है, हम कितने खुश हैं। वो तो मुझे क्या, किसी को भी दिखाई नहीं देता है, किसी को नहीं दिखाई देता है। शर्म आती थी कई बार लोगों के, संविधान क्या करना है पढ़ के, कौन चक्कर में पड़े। यार तुम वकील हो क्या? हमें क्या लेना है संविधान से भाई? हमें अपना काम करना है तो संविधान की बात ना करो हमसे। असली बात यही है, हमसे बात ना करो। हमसे बात करोगे अब हम तो आपका संविधान का ही लेक्चर काट ही देंगे थोड़ी देर में, कि आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, आप सुनते नहीं किसी की बात। हम कितनी बार कह चुके हैं आपके साथ हम मत बनाया करो, फिर वीडियो बनाते हो। क्योंकि मैं देशद्रोही हूं इसलिए बनाता हूं, और बोलो ऐसे ही बनाऊंगा, जो करना है कर लो। मैं तो देशद्रोही हूं। अगर आप बजाज को देशद्रोही कह सकते हैं, दूसरे उद्योगपति को देशद्रोही कह सकते हैं, मैं तो छोटा सा आदमी, बजाज तो करोड़पति अरबपति है। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा आदमी जिसने छोटी सी पढ़ाई कर ली, छोटी सी नौकरी कर ली, रोटी खा ली, जिंदगी में बसर कर ली, अब बूढ़ा हो गया, मरने के तैयार है। तो मैं तो एग्जिट पे हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो एग्जिट पे होते ना, कोई चिंता नहीं होती भाई। ये हाउस तो छोड़ना है एक दिन, चिंता है किस बात की? दूसरे हाउस में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, जहां ऊपर वाला चाहेगा चले जाएंगे। पर इसमें मैं नेताओं से क्यों डरूं? नेताओं से मैं नहीं डरूंगा, उनको मैं डराऊंगा, क्योंकि वो मेरे नौकर हैं। फिर मैं कहता हूँ, यही कहता हूँ, मेरे देश का खाना देता है उनको, मेरा देश पैसा देता है उनको, मेरा देश उनकी गाड़ी देता है, उनको एसपीजी देता है, उनको बंगला देता है, उनको सब देता है। तो मैं तो उनसे पूछूंगा, जवाब दो, अच्छे नेता बन के दिखाओ, बिना पूछे जवाब दे के दिखाओ। वो होता है नेता, देखिए मैंने ये किया था, मैं संडे को जवाब देता हूँ, आज मैं भाया नीचे जल्दी, पता नहीं लगा, मैं समझा आप वहीं गए होगे, इसलिए मैं नीचे बैठा हूँ, जल्दी से जल्दी चलते। क्या करेंगे आप? आपकी जिम्मेदारी आपको निभानी है, और जो आपकी जिम्मेदारी लेगा आपको वो भी निभाना है। अलग से नहीं होती जिम्मेदारी, जिम्मेदारी पोस्ट के साथ होती है। आई एम एक्सप्लेनिंग टू पीपल and to particularly those bhakts, devotees of Modi government and Modi,
that everything is fine for them, all development is going for them, there is no economical crisis for them, they are living in fool's paradise. No problem, live. मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप वोट किसको देना, मुझे लेना देना कुछ नहीं उस बात से. What I am saying is, be fair, think for your future, think for a nation, because if your nation progresses, you progress. You cannot say that is my responsibility, it's not my act. जिम्मेदारी तो भाई आप ही की, हम सबकी, आपको लेनी होगी. ये देश आपका है तो आपको मानना भी होगा, आपको जिम्मेदारी भी लेनी होगी, आपको इस बात को समझना भी होगा और इस बात पे आगे चलना भी होगा. दोनों बातें हैं. हर बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बात कहीं ना कहीं से तो शुरू होती है और कितने रास्ते तय करती होगी बात आपकी और कहाँ जाके खत्म होती है या वहां से भी वापस आती है, तो और भी बड़ी बात होती है. ये बात बहुत जरूरी है. Everybody has to think about this, what I'm thinking. It's not because I'm thinking only for myself, I think of people of this country, that they have to start thinking. I'm not bothered who is in power. That's not my alone outlook, that's your outlook. Whom you want to keep in power. But do not keep in suspension. You want solid people to work for you, for us. If somebody is from opposite side, no problem in the mind, as far as that doesn't harm me or my contents. Very possible, very possible. What we have to do, what we have to plan for future, what we have to think, it's very, very important that we have to think correctly. We have to think in right direction. It's very important. We do not think right direction. We have to think in a way that we get solutions to problems. We are not to depend upon other nations to solve our problems. We have to take tomorrow also as far as Bharat. Yes, time is moving. Remember, time shall not wait for you. You have to wait for time. Nation should move in right direction. And who shall decide this direction? Public shall decide this direction. If you just stay to what leaders do, we shall certainly lose in that. Leaders are only interested in power and in money. They are not interested in your life. They may say, but they are not interested. कितनी समस्याएं इस देश में हो, कितने भी हो, डरने की बात नहीं है. समस्याएं तो आएंगी, सुलझी जाएंगी, कितनी भी हो. वो देश क्या जो समस्याएं ना हो, वो क्या देश. जहां लोग होंगे समस्याएं भी होंगी. Where there are people, there must be problems. Because people are people, they have requirements, they have future, they have to make themselves, this country forward, develop a status country. So we have to solve problems. Even countries who have been developed long back, they are having problems. No one is free. Then why should we worry about problems? We should not worry about problems, but we should think how to solve that problem, how to solve this problem. That's more and more and more and more important. Just like we study subjects, we do not understand theory, we do not understand tutorials, we do not understand how to solve numericals, but we try to understand, we try to restudy that, or we to try more practice on that, and then we reach some state that yes, it can be done like
happiness. That's important. If I leave it to everything else, no, it's not like that. That will not work. Solution to every problem is important. But question remains, who shall solve that? You just take some pot and cook and ask for some order to get in. When you do yourself, you are more confident to solve problem because first you will understand everything. And if you don't go to him, you make it yourself, then you shall have a problem that you are those there. Well, actually, I wanted to talk on safety today, but due to some error on computer, I changed my mind because it was to be restarted, and so I said, let us complete today hot topics, which are very, very risky one. Politics is moving its way, people are moving other way. We are interested on our success and loss of our future. Time is very important for everybody. Why should I worry about all this? Why should you worry about this? Whatever list something on these titles, these all are part of this nation. We are not getting earning. We are not getting profit, but our expenses are rising every day. If there is no job, if there is no employment, and if you increase rates of everything, you cannot move strength. See, there is no limit to talk. No limit to talk. You can bring one thing and go to other thing. But wherever you have to talk, you tag it field in your option. There was a time when we used to have our plans long back. There were good times when we used to have our plans for implementation, for approval, and for planning and legislation. We had very good plans. 5-year plans or 10-year plans. You may say, now it will be 10-year plan, it will be 25-year plan, or it can be 50 years plan. Those plans have been buried, and these leaders now in power, they think they can chart plan themselves. This is a problem. Our plan should be comprehensive, first of all. We should have plans, they should be comprehensive. And this should include all sorts of people with these plans. If your plan is fine, you can take it outside and wash there. Sometimes I feel myself hesitant to tell people. Why should I tell? But you people are brave enough to face such trains. Look, we are in Bharat, India, and this is our good fortune that we are here. This country gives everything to all. This country is not poor from that viewpoint. Those youth
Again, I am stressing on youth because youth has future. Every youth has future. Decide yourself. Decide yourself that youth shall not oppose others. No youth can stay, can run away from responsibility. If you run away from responsibility, you run away from your nation. You run away from your country. That is true. You may you may like whatever opposition leaders ask you, do it, no problem to me, and no problem to this. But you have a problem that you don't want to be responsible. You want to be responsible only to part of your job. There only, and that's also not full absolutely. You want to please your seniors to get benefit means sometimes you want to run away from the street. You may be thinking, I'm just talking nonsense. Yes, you may be thinking, I'm talking nonsense. Am I enemy of your country? You think so? I am talking because this country gave me education. This country brought me up. This country provided whatever benefits I could get when I was here. This country made me capable for myself and to others. How can we then say that I am a terrorist? Sometimes it's dark. Sometimes it's morning. Sometimes it's evening. Sometimes it's midnight. Sometimes 8 o'clock. If you keep staring like me, it will not work. You have to improve your knowledge of constitution, knowledge of your subjects, and you have to self-study. You cannot keep future in people's hands or in leaders' hands. You cannot keep your future in their hands. When darkness is there, I don't think that this is silence. When light is there, you are not caring for light. You don't care that, oh, I also. भारत भाग्य विधाता. Bharat Bhagya Vedanta means do you feel to take bath when it's cold? You think so?
Should you like to take bath in cold water when it's cold weather? Or you like to take geyser water? Think yourself. Which one shall suit you? That is answer to your problem. If you want to solve problem of this country, only you can solve it. No one else can solve problem. Simple. Do what Lebanon people did, do what Iraq people did, and do what Hong Kong people did. You'll solve your problems. Don't expect leaders to solve your problems. They will complicate your problems. They will not solve your problems. And they are not even interested in you. But you have to be united. People have to be united. People have to realize that they are losing their funds. They are losing their monies. People should realize that. Unfortunately, they don't realize that. If you don't realize, you will lose. You are losing your money. You are losing your wealth. And you will gain nothing. Look, I am not interested in criticizing someone. I want to see Bharat preserves itself. Bharat people are not cheated by politicians. What you do is your choice. My choice is that people need be strong. People need be opposing government. Opposing government is very important. Opposing government is very important. If you don't oppose, you will not earn anything. And it is not sole aim that you oppose government only. Let them know, these government guys know that people are opposing them. They don't know you. Students who are suffering from raise of fees must continue to do their revolution, and their parents must help them, and people who are in government on an average basis should help public. Sometimes what happens that young girls assume sometimes what happens, problems are solved automatically, and sometimes these problems keep up cropping in. We have to do only study, few years study, then we have to learn something, and then we need job. If our government cannot create jobs, cannot update its education system, cannot do educated classes, I'm sorry, my retender is this. Now, एक बहुत बड़ी बड़ी बातें होनी चाहिए, सब लोगों को समझना चाहिए। हम लोगों को, मैं कुछ कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ समझ तो लोग बाकी भी समझ रहे हैं। आप अब अपने लाइफ को आसान मत लीजिए। बहुत हुआ, बहुत हुआ।
कुछ जिम्मेदारी लेना सीखिए। भारत की सरकार से प्रश्न करने का हक सबको है। हर इसके लिए ये नहीं कि वहां से ले लिया हाथ में और चलते रहे, चूहे पकड़ लेंगे, उनको ठीक कर देंगे, उससे बात बनने वाली नहीं है। सबको सोचना होगा, सबको समझना होगा, तभी गाड़ी आगे बढ़ी जा सकती है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ी जाएगी। रेल खींचने के लिए इंजन की जरूरत होती है और पीछे गार्ड की भी जरूरत होती है। गार्ड धक्का नहीं देता, लेकिन झंडी जरूर देता है। ये जरूर देखता है कि भरने के बाद लोग बाहर तो नहीं है और नहीं है। जो समझता है कि हो गई तो वो भी गाड़ी को सोच ही देता है। जब जब रेल का इंजन काम नहीं करेगा, गार्ड काम नहीं करेगा, तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी। जब जब अब मैं सोचते होंगे आप, मैं खाली बैठ के चुपचाप बैठा हूं, बोर कर रहा हूं आपको, ऐसा मत सोचिए। मैं चाहता हूं आप भी सोचिए, क्योंकि मैं लिख के नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ऑन टाइम लाइन पर बोल रहा हूं। देखिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब देश की समझ जाए, देश की प्रॉब्लम्स आपको समझ आने लगे कि ये कैसे हल इनका निकलेगा, तो ये नेता अपने आप ठीक हो जाएंगे। आपको गुस्सा आता है युवाओं को कि आपकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, सही गुस्सा आता है आपको, आपकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो उसका मतलब क्या है? आपकी बातें ना सुनने का पता नहीं क्या हिस्सा है। मैं सोचता हूँ सोसाइटी को चलाना दूसरी बात है, उनके साथ रहना अलग बात है। जब भी कहते हैं देश का नुकसान होने वाला होता है या देश में बहुत कुछ चेंजेस होना होता है, तो देश की सरकार फिर गलत सोच नहीं सोचती, उसको कर दे जाती है, होता है। क्या बताएं, तो नहीं आ रहा। इकोनॉमी जब तक सुधरेगी नहीं, इकोनॉमी जब तक सुधरेगी नहीं, अर्थव्यवस्था सुधरेगी नहीं, हम बर्बाद हैं। याद रख लीजिएगा। आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें, बड़ी से बड़ी डिग्री कहीं से कर लें आप, कोई सी भी डिग्री कर लें आप, एमबीए कर लें, आईआईएम से कर लें, पीएचडी कर लें, इंजीनियरिंग के कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक हमारा पैसा हमारे काम नहीं आ रहा, हमारा पैसा हमारे देश की, हमारे पब्लिक के काम नहीं आ रहा, हमारा किस काम का? आखिर देश कैसे आगे बढ़ता है? पैसों से आगे बढ़ता है, पैसों से स्कीम चलाई जाती हैं। आज तो मैं देख नहीं रहा कि स्कीम चल रही होगी। फिर भी हम और से आगे बढ़ सकते हैं। खैर, ना सही आप इकोनॉमी पे ध्यान नहीं देते, ना दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई तो अच्छी तरह कीजिए।
समझ के कीजिए। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंसेस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ह्यूमैनिटीज, जो भी है, कम से कम इतना तो कंपटीशन में आइए कि आप वर्ल्ड लेवल पे मुकाबला कर सकें। पढ़ाई लिखाई ऊपर से की जाती है, हायर स्टडी की जाती है, वो खेल नहीं होती खाली, उसमें दिखाना भी पड़ता है। ये बातें जरूरी है। दूसरी बात होती है कि जो प्रॉब्लम्स चल रही है देश में, एक तो आप लोग इंटरनेट पे कम ध्यान दीजिए, गाने बजाने पे, और न्यूज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान दिया, डिबेट्स हो, कुछ हो, ताकि आप भी पार्टिसिपेट कर सके उसमें। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हर बात में, खाली ये डिबेट नहीं, हर चीज में डिबेट, भूल जाइए टेलीविजन चैनल क्या करते हैं। फेसबुक पे भी डिबेट की जा सकती है, क्वेश्चन आंसर किए जा सकते हैं, और भी ट्विटर है, दूसरे हैं। सिर्फ ये सोच के ना बैठे कि हम सब कुछ हो गए। खुद देख सकते हो कि जब इतनी गंद थी तो वो एरिया की वैल्यू क्या होती थी, और जब गंद निकल गई तो एरिया की वैल्यू क्या है। ये सब ये लोग नहीं जवाब देंगे आपको। ये तो सिर्फ आपको भड़काने में लगे रहेंगे। इनको यही काम है। बहुत जरूरी है। सीरियस में इसलिए बोल रहा हूं आज कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या हो रहा है। मुझे एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं दिख रहा देश का जहां कह सकते हो कि हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। चुनाव ले लो, चुनाव में गड़बड़। सरकारी काम ले लो, सरकारी काम में गड़बड़। शिक्षा ले लो, शिक्षा में गड़बड़। फैक्ट्री इंडस्ट्री की प्रमोशन ले लो, उसमें गड़बड़। अगर हमारी सरकार या हमारा बड़ा मंत्री ये सब करने में असमर्थ है तो फिर क्या इलाज है। ये तो पता लगाना ही पड़ेगा वो कैसे असमर्थ है। नहीं लगेगा पता ना क्या, ये पता नहीं करना चाहिए क्या, ये बहुत जरूरी है, पर हम नहीं करते। सत्यमेव जयते हैं, अदालतें अपना काम करती हैं उसके नीचे बैठ के। सत्यमेव जयते, बड़े बड़े मिनिस्टर झंडा लगा के भारत का बैठ के सत्यमेव जयते करते हैं। लेकिन सत्यमेव जयते कितना परसेंट होता है? क्या वास्तव में सत्यमेव जयते होता है, या अदालत में झूठी कसम ली जाती है, या हमारे मंत्री झूठी कसम लेते हैं और एमपी झूठी कसम लेते हैं? सत्यमेव जयते कहाँ होता है? क्या है सत्यमेव जयते? एक कहानी, एक कल्पना, या विश्वास, या एक लॉजिक, या कुछ और? लेकिन सत्यमेव जयते तो कहना पड़ता है। ये आप कहेगा, कोई नहीं कहेगा, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। हम एक शक्तिशाली देश हैं। भारत एक शक्तिशाली देश है, था, जरूर था। हम अंधविश्वासी देश कभी नहीं थे, लेकिन आज हैं अंधविश्वासी। हम शक्तिशाली थे, ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं उसके ऊपर। आप सत्यवाद से देख लीजिए, कब सत्यवाद था, कितने साल पहले था।
जगत का द्वार, यज्ञ का द्वार, ऐसे नहीं बना, ये बना भी नहीं बना। खैर, शक्तिशाली तो हम रहेंगे। कहते हैं राम का भी समय था, कृष्ण का भी समय था, हरिश्चंद्र का भी समय था, और उससे पहले भी समय थे। हम उसमें नहीं जाते क्योंकि हम जाना नहीं चाहते। हम आज के भ्रम में रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, भ्रम भ्रम ही होता है और सच्चाई सच्चाई ही होती है। 60-60 साल, 70 साल की उम्र रह गई, 80 साल की उम्र रह गई, एक समय तो 100 साल की एवरेज आदमी भी जिंदा है। हम कुछ भी बात कर ले, कुछ भी ढीले ढीले लंबे लंबे बात कर रहे हैं, होता तो वही जो होना चाहिए। देश को अगर आगे बढ़ाना है, अच्छे रास्ते पे लाना है, तो आपको आवाज तो उठानी पड़ेगी, जरूर उठानी पड़ेगी। 4 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ हो गया अंबानी का, सोचिए। 4 लाख करोड़ to 10 लाख करोड़, progress of Ambani. And what is your progress? 8% to 4% or 3% or 2%. This is your progress. No jobs for qualified people. Retrenchment of jobs. Continuation of no job. Rising taxes. What else to speak about? What else to speak about? कुछ भी कह लें हम, कौन सुनता है, कौन मानता है? बस खड़े हो जाओ जंतर मंतर पे, बस शोर मचाए जाओ, कुछ आ जाए छोटे चैनल, आपका वीडियो बन जाए, इतना काफी है। इतना काफी है क्या? गोडसे को देशभक्त कहा जा रहा है, गोडसे को देशभक्त कहा जा रहा है, जिसने गांधी को मारा। गांधी मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा आजादी के समय का नेता, और आज के समय का हमारे देश का सबसे बड़ा मालिक, हमारे देश का सबसे बड़ा हेड फैमिली का, परिवार का, उसको कहा जा रहा है, उसके मारने वाले को, उसका कत्ल करने वाले को देशभक्त। और हम ये सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, हम कुछ नहीं जवाब दे रहे, कुछ नहीं बोल रहे। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों? खाली धरना करना काफी है? खाली कुछ देर, एक दिन 2 दिन हाय हाय करना काफी है, या इससे भी आगे कुछ और? ये प्रश्न है, बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। और ये खाली इसी बात का नहीं, और भी बातें हैं। आप एंटी नेशनल हैं, आप फल नहीं, आप लहसुन खाते हैं, यस, हम कुछ नहीं खाते, हम तो झूठा कूटा खाते हैं, हमारे में दिमाग नहीं है, हम सोच नहीं सकते।
ये सब बातें सोचने तो पड़ेंगी। हमें कोई कुछ भी कह देगा हम सह लेंगे, क्यों सह लेंगे भाई? इतनी शक्ति हमारे पास होते हुए भी कहते हैं। आप आखिर चाहते क्या हैं? ये प्रश्न मुझसे भी लोग पूछेंगे और मैं भी लोगों से पूछूंगा, आखिर आप चाहते क्या हैं? आप चाहते इस देश का बंटाधार हो जाए, ये देश टूट जाए, हिंदू मुसलमान की बात करके टूट जाए? क्या फायदा सोचते हैं आप उससे? क्यों टूट जाए? देश बड़ी मुश्किल से बना था आजाद, पूरी कोशिश की थी, कुछ एमपीओ ने इसको सर से चलाई। देश देश है, उससे जब गार्डन होता है उसमें पानी लगाया जाता है उसको खाना खिलाने के लिए, पेड़ होता है उसकी तराई की जाती है उसको खाना खिलाने के लिए, और जब देश होता है तो उसकी भी तराई की जानी चाहिए या उसकी आग लगाई जानी चाहिए। आग लगा के जला देना बड़ा आसान है, किसी को मार देना बड़ा आसान है, किसी को बनाना बहुत मुश्किल है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। आप कैसे बना सकते हैं, आप कैसे तोड़ सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का फैसला लिया गया सरकार द्वारा, आंख बंद करके लिया गया, दिमाग बंद करके लिया गया कि इसका अंत क्या होगा। अंत आज की तारीख तक भी नहीं मिला और लगता नहीं कि जल्दी अंत हो जाएगा, क्योंकि दिमाग से जो फैसला नहीं किया गया, सिर्फ एक लोग को खुश करने के लिए किया गया, एक कमेटी। देश का जो हाल आज है, तो इमेज देश की बन रही है, जा रही है।